Namaskar Dostan. A very warm welcome to our YouTube channel, Gurukulam Coaching Institute Shimla. In today's video, we'll talk about India's latest GST revenue report, जो बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार recovery के रास्ते पर है. Let's understand how India managed to collect 1.96 lakh crore GST in October 2025, even after recent tax reductions. सबसे पहले जानते हैं कि GST है क्या और ये क्यों ज़रूरी है. GST यानी Goods and Services Tax एक indirect tax system है जो पूरे देश में लागू है. It replaced multiple taxes like VAT, service tax, and excise duty, and brought everything under one unified structure. It helps government track business transactions easily, reduces tax evasion, and increases transparency in the economy. Now let's talk about the latest numbers. In October 2025, India collected 1.96 lakh crore in GST, which is a 4.6% increase compared to October 2024. पिछले साल की तुलना में ये बड़ी बढ़त मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान सरकार ने कई टैक्स कट्स भी किए थे, जैसे कि essential items और कुछ EV components पर टैक्स कम किया गया था. Despite these reductions, revenue has remained strong, showing robust domestic demand and better compliance from businesses. तो सवाल उठता है, इतनी steady growth आई कैसे? Experts believe there are three main reasons. Pehla, festive season effect. October marks the beginning of major festivals like Diwali and Dussehra, जिससे retail sales, automobile और service sector की demand बढ़ जाती है. दूसरा, manufacturing and imports. Manufacturing sector ने strong recovery दिखाई है और imports में भी अच्छी growth हुई है, जिससे IGST collection बढ़ा है. तीसरा, better technology and compliance. GST portal में AI-based data tracking और e-invoicing system की वजह से tax evasion में कमी आई है और genuine taxpayers की संख्या बढ़ी है. कुछ राज्यों ने इस महीने शानदार performance दी. For example, Maharashtra, Karnataka, Gujarat, and Tamil Nadu recorded the highest GST collections. जबकि कुछ छोटे राज्यों जैसे Himachal Pradesh और Goa ने भी double-digit growth दिखाई. This indicates that India's growth is widespread, not limited to just big industrial states. Experts say that if this trend continues, India might soon cross the 2 lakh crore GST mark per month. Economists believe this is a positive sign for the economy, showing strong consumption, rising income, and effective tax administration. हालांकि experts ये भी मानते हैं कि सरकार को MSME सेक्टर के लिए टैक्स सिंप्लिफिकेशन और रिफंड प्रोसेस को और आसान बनाना चाहिए ताकि छोटे व्यवसायों को और राहत मिल सके. So friends, in simple words, even after tax cuts, India's GST collection has grown by 4.6%, showing that our economy is moving on the right track. 1EE1F3. This growth reflects confidence